What is supervised and unsupervised learning? That's what I am trying to answer today. Machine learning क्या होती है? It starts with the concept of learning. Machine पे होने वाली है. Hi, my name is Deepesh and I work at the Correlation School of AI and Data Science. मुझसे एक सवाल पूछा जा रहा है. What is supervised and unsupervised learning? That's what I am trying to answer today. So we all know machine learning क्या होती है. If you don't, then probably this video is second in your list. चालू उससे करना जहां पे मैंने machine learning पे बात करी है. But machine learning, again, as we know, starts with the concept of learning. मशीन पे होने वाली है, इस मशीन लैपटॉप की बात होने वाली है, बट मशीन लर्निंग कैन लार्जली बी ऑफ टू टाइप्स, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड. को समझने के लिए वी मस्ट फर्स्ट आस्क द क्वेश्चन कि हम क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं. लेट्स से द ऑब्जेक्टिव इज सेल्स एंड हम जानना चाहते हैं विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द सेल्स पीपल कि कोई भी जना अगर लेट्स से अपने स्टोर में वॉक इन आया है एंड वो कुछ भी चीज परचेज करेगा या नहीं करेगा, एंड यूजुअली वी रिप्रेजेंट देम विद अ 1 और अ 0. परचेज जब भी करेगा, जब भी टारगेट वेरिएबल की वैल्यू यस होने वाली है तो 1 लिखते हैं, जब भी नो होने वाली है तो 0 लिखते हैं. बट परचेज करेगा या नहीं करेगा, इफ दैट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन, तो हाउ विल अ पर्सन लर्न. पर्सन कुछ तो उसके एट्रीब्यूट्स देखेगा. फॉर एग्जाम्पल, इस पर्सन ने क्या क्लोथ्स पहने. माई होप इज पीपल क्लोथ से जज नहीं करते हो, लेकिन ठीक है, करते होंगे शायद. मे बी कौन सी वॉच पहनी है, एंड मे बी अ लॉट मेनी मच सच फैक्टर्स. और ये सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स वो देखने वाले हैं, इस एट्रीब्यूट के बेसिस पे अगर वो बोल पा रहा है कि ये खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, बट दैट बोल पा रहा है इज असेंशियली अवर प्रिडिक्शन. सपोज वी थॉट कि एक जना अपने स्टोर में आया है, वो जना नहीं खरीदेगा, लेकिन उसने खरीद लिया. अपेरेंटली वी वर रॉन्ग. सो परचेज एक्चुअली किया कि नहीं, एंड ये जो प्रिडिक्शन है हमने जो किया था कि वो नहीं खरीदेगा, जबकि एक्चुअली उसने कर दिया एंड वी वर रॉन्ग. दिस सिचुएशन, इफ दिस सिचुएशन हैपेंस कि हमें एक रियल आंसर मिलेगा एज इफ एक गाइड है जो हमें ठीक करने वाला है कि भाई यू मेड दिस मिस्टेक बिफोर, तूने जो बोला था वो गलत था, और एक्चुअली में उसने परचेस किया है. एंड exactly this guidance is what happens in supervised learning, and that is why उसका नाम supervised है. Supervised is presence of the target variable, the actual value of the target variable, but नाम supervised इसलिए कि कभी ना कभी हमें अपने सही किया कि गलत किया, that is validated. We get to that guidance, and that is why we sort of behave as if we have this invisible supervisor that can help us learn better, and this is supervised learning. अब अगर वो एक कैटेगोरिकल सिचुएशन होगी वेयर द target variable is categorical, a yes or a no, then we call it classification. Whereas if this target variable was not कि खरीदेगा कि नहीं, but rather कितना amount का खरीदेगा, what would be the revenue from the given person? Is it a big shot जो बहुत ज्यादा खर्चा करे and अपना revenue ज्यादा होगा, or is he a person who will just come and purchase very few small things, एक cap खरीद ली, एक belt खरीद लिया, 100-200 rupees कम amount का खरीद लिया, तो what could be the expected revenue amount from that person? तो वो again कुछ ऐसा होता, again similar attributes होते, क्या क्लोथ्स हैं, क्या वॉच खरीदी, एंड बहुत सारे दूसरे एट्रीब्यूट्स, एंड देन द अमाउंट दैट वी प्रिडिक्ट एंड द एक्चुअल अमाउंट. इन दिस सिचुएशन एग्जैक्टली यही चीज को अपने कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं. तो अगर ये कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है अपना टारगेट वेरिएबल, देन दिस इज द सिचुएशन व्हाट वी कॉल रिग्रेशन. सो सुपरवाइज्ड लर्निंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू आइदर क्लासिफिकेशन or regression, depending on how the target variable is. Whereas with unsupervised learning, there is no concept of target variable in the first place. Chalo, let's take the example there. With unsupervised, let's take this example जहां पर हम लोगों को rather than looking at कि कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, we want to talk about कि अलग अलग तरीके के लोग किस ग्रुप में बिलोंग करते हैं. अगर कोई एक तरीके के लोग हैं जो, एंड फॉर एवरी पर्सन लेट्स से वी आर ट्राइंग टू मेजर कि उन लोगों को घूमना कितना पसंद है, हाउ मच डू दे लाइक टू ट्रैवल, एंड दूसरी तरफ देख रहे हैं हाउ मच डू दे लाइक टू शॉप, कितना शॉपिंग करना पसंद है. तो कुछ तरीके के लोग होंगे जिनको ट्रैवलिंग तो कम पसंद है बट शॉपिंग ज्यादा पसंद है. कुछ तरीके के लोग होंगे जिनको
शॉपिंग कम पसंद है, ट्रैवलिंग ज्यादा पसंद है। और ऑफ कोर्स देयर वुड बी अ लॉट मेनी मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, जिनको दोनों पसंद नहीं है, जिनको दोनों पसंद है। एंड क्योंकि अब इतने अलग अलग तरीके के लोग हैं, वी कैन स्टार्ट ग्रुपिंग, वी कैन स्टार्ट से कि भाई ये वाले लोग एक ही तरीके के हैं एंड ये वाले लोग दूसरे तरीके के हैं। whereas we could have very well a very third kind of people when we try to group। यहाँ पे कोई टारगेट वेरिएबल नहीं था, वी आर नॉट प्रिडिक्टिंग वन थिंग और द अदर। exactly this situation is what we call clustering। we cluster, we are grouping, and without any target variable। The target variable as the concept is missing। So how do we group? How do we learn कि कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड करना है, कितनों में डिवाइड करना है, कौन किस ग्रुप में आएगा? All that is unsupervised। There is no target variable। There is no one who can eventually tell कि ग्रुपिंग सही करी कि गलत करी। जैसे एक टारगेट वेरिएबल एक इनविजिबल सुपरवाइजर जैसे बता पा रहा था, हमारे यहाँ वो अब कोई तरीका नहीं है। Hence we termed it unsupervised। There's another way of unsupervising in which we try to reduce the dimensions। We try to see कि भाई अगर अपन ने कुछ डेटा सेट को रिप्रेजेंट किया है कुछ एट्रीब्यूट्स में, x1, x2, x3 and so on, let's say there were 3 attributes and we want to reduce it down to fewer number of columns। ये सेम बात कम कॉलम्स में भी रिप्रेजेंट हो, हम सिमिलर बात बता पाए कम कॉलम्स में। दिस इज व्हाट वी कॉल डिमेंशनैलिटी रिडक्शन। वन ऑफ द वेरी फाउंडिंग एग्जांपल्स जो मैं आई थिंक हर जना कनेक्ट करेगा, लेट्स से वी आर ट्राइंग टू मेजर हाउ हेल्दी अ पर्सन इज एंड हेल्थ ऑफ अ पर्सन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड यूजिंग द हाइट एंड द वेट। हाइट ऑफ द पर्सन एंड वेट ऑफ द पर्सन। नाउ जस्ट इमेजिन कि अपने जो दोनों कॉलम्स हैं हाइट एंड वेट, इससे अपन एक सिंगल कॉलम बीएमआई बना सके। अब एक सिंगल कॉलम कैन होस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ योर हेल्थ, राइट, instead of the height and the weight। So if we can somehow combine these columns together to reduce the total number of columns yet keeping information content as same, this is what we call dimensionality reduction। And again, that doesn't require any target variable, that doesn't have any target variable which we are trying to predict। हमने तो सिर्फ पूरी इंफॉर्मेशन को कम कॉलम्स में रिप्रेजेंट किया। Now how can that be done? This is again an example of unsupervised learning। So largely machine learning which was supervised and unsupervised can further be broken down into the supervised can further be broken down into the regression examples and the classifications, whereas the unsupervised learning can be broken down into the clustering and dimensionality reductions। So regression, as the summary, is where the target variable is continuous। Classification is when the target variable is categorical। Clustering is when you do grouping, there is no target variable, all you are caring about is how to group people or how to group books or how to group movies together। And in dimensionality reduction, you just want to reduce the number of columns while keeping information content as much as possible। So you're just reducing the number of columns। This is supervised and unsupervised learning। I usually help people with their doubts. I usually help people with their careers. So in case you have any doubt about machine learning, data science, artificial intelligence, and you want to connect with me, feel free to reach out to my team. The number is down in the text below. And if you would want to connect with me on LinkedIn, I'll be very happy to do that। The link is again down in the text। See you soon।